Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 16 of Business Mathematics UrduMTH367. So today we will continue studying chapter number 11, which was about the simplex and computer solutions methods. So in the last lecture we studied the simplex method for maximization problem with all less than equal to constraints and maximization problem with mixed constraints. So today's topics. Today we will start with minimization problems. After that we will study some special phenomena, alternative optimal solutions, no feasible solution and unbounded solutions by using their examples. Minimization problems. तो लास्ट लेक्चर में हमने मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम किए थे. एक प्रॉब्लम था जिसमें हमने तमाम लेस देन इक्वल टू की कंस्ट्रेंट ली और एक प्रॉब्लम में हमने मिक्स कंस्ट्रेंट ली. एक लेस देन इक्वल टू की कंस्ट्रेंट थी और दूसरी ग्रेटर देन इक्वल टू की कंस्ट्रेंट. सो ग्रेटर देन इक्वल टू की जो कंस्ट्रेंट होती है उसमें हम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करते हैं और एक सरप्लस वेरिएबल को सबट्रैक्ट करते हैं. और जो लेस देन इक्वल टू की कंस्ट्रेंट होती है उसमें हम एक स्लैक वेरिएबल को ऐड करते हैं. तो जब हम टेबल की फॉर्म में लिखते हैं तो अगर कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू की टाइप की हो तो हम जो हमारी रो ज़ीरो होती थी उसमें कोफिशिएंट जो था वो हम -m लेते थे, यानी z के अंदर जो चेंज आती थी उसका कोफिशिएंट आर्टिफिशियल वेरिएबल का -m होता था. तो ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा डिफरेंट है मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में. यहाँ पे हम -m के बजाय +m लेंगे उस कोफिशिएंट को. So the simplex procedure is slightly different when minimization problems are solved. So aside from assigning artificial variables objective function coefficients of +m, the only difference relates to the interpretation of row 0 coefficients. So the following are two modifications of rule 1 and rule 2. These apply for minimization problem. तो रूल 1 और 2 जो थे उनको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और उसी को फिर हम यूज़ करेंगे मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में. और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं उनको हम +m की वैल्यू देंगे. रूल 1a, optimality check in minimization problem. In a minimization problem, the optimal solution has been found if all row 0 coefficients for the variables are less than or equal to 0. So if any row 0 coefficients are positive for non-basic variables, a better solution can be found by assigning a positive quantity to these variables. तो minimization के प्रॉब्लम में optimal solution आपके पास तब आएगा जब तमाम जो रो ज़ीरो को कोफिशिएंट्स होंगे वो आपके पास नॉन पॉजिटिव होंगे, यानी या वो लेस देन 0 होंगे या फिर वो इक्वल टू 0 होंगे. तो बेसिकली ये उलट है मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में. जब हम कहते थे कि मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन तब आता है जब तमाम रो ज़ीरो के कोफिशिएंट्स नॉन नेगेटिव हो जाते थे, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते थे. अब हमारे पास तब आएगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में जब रो 0 के तमाम कोफिशिएंट्स लेस देन इक्वल टू 0 होंगे. तो अगर कोई भी कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कि हम एक बेटर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. Rule 2a. So new basic variable in minimization problem. So in a minimization problem, the non-basic variable which will replace a current basic variable is the one having the largest positive row 0 coefficient. Ties may be broken arbitrarily. तो जिस तरह हम maximization के problems में एक नॉन बेसिक वेरिएबल को बेसिक वेरिएबल बनाते थे तो उसके लिए अब हम सबसे नेगेटिव वैल्यू को चूज़ करते थे. तो रो 0 में जिस कॉलम के नीचे यानी जिस कॉलम में और वेरिएबल के नीचे सबसे नेगेटिव वैल्यू होती थी तो उसको हम चूज़ करते थे एज ए की कॉलम और उसको हम एक बेसिक वेरिएबल में चेंज करते थे. लेकिन इस केस में अब हम सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी, जो सबसे जो पॉजिटिव वैल्यू होगी, उसको हम की कॉलम लेंगे और उसको हम न्यू बेसिक वेरिएबल में चेंज करेंगे. सो द रेस्ट ऑफ द रूल्स विल बी सेम, यानी जब आपके पास न्यू बेसिक वेरिएबल डिटरमिन हो जाए तो उसके बाद आपने लीस्ट रेशो ही देखना है और फिर लीस्ट रेशो वाले जो आपके पास वेरिएबल होगा, जिस रो में लीस्ट रेशो होगी, तो जिस नॉन बेसिक वेरिएबल को आप बेसिक बना रहे हैं उसको आप जिस रो में लीस्ट रेशो आएगी उसके साथ जो बेसिक वेरिएबल होगा उससे रिप्लेस कर देंगे. सो द रेस्ट ऑफ द रूल्स आर जस्ट द सेम. सो रूल 1 and rule 2 have the slight modifications. Rule 1 में आपने जो है तो
ऑप्टिमल सोल्यूशन तब आएगा जब तमाम कोफिशेंट्स नॉन पॉजिटिव हों, यानी लेस देन इक्वल टू 0 हों, और की कॉलम वो होगा जिसमें सबसे बड़ी पॉजिटिव वैल्यू होगी. सो लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल. So the example is solve the following linear programming problem using the simplex method. So the question is to minimize z is equal to 5x1 plus 6x2 subject to x1 plus x2 is greater than equal to 10, and the second constraint is 2x1 plus 4x2 is greater than equal to 24, and x1 and x2 are positive, or rather non-negative. So solution. So this problem is first rewritten with the constraints expressed as equations as follows. तो इसको हम simplex method में जो requirement है उसके तौर पे लिखते हैं इसी problem को. तो हमारी जो constraints हैं वो चूँकि greater than equal to की constraint हैं, तो हर constraint के correspond left hand side पे हम एक artificial variable और एक surplus variable को इंट्रोड्यूस करेंगे, सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करेंगे. तो हमारे पास जो कंस्ट्रेंट नंबर 1 है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, वो चेंज हो जाएगी x1 प्लस x2 माइनस e1 प्लस a1 इज इक्वल टू 10. और इसी तरह हमारे पास जो कंस्ट्रेंट नंबर 2 है 2x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 24 चेंज हो जाएगी 2x1 प्लस 4x2 माइनस e2 प्लस a2 इज इक्वल टू 24. तो अब हमने 4 नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराए हैं जो कि हर कंस्ट्रेंट के कॉरेस्पॉन्ड 2 हैं. तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके अंदर भी हमारे पास 4 नए वेरिएबल आएंगे, और जो कोफिशिएंट होंगे नए आर्टिफिशियल वेरिएबल के उनको हम पॉजिटिव m लेंगे बजाय के नेगेटिव m लेने के, जो कि हम मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में लेते थे. तो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में हम उनको प्लस m लेंगे इन कोफिशिएंट्स को जो कि आर्टिफिशियल वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं. सो नाउ वी हैव, जब हम इसको, तो बेसिकली ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसको टेबल की फॉर्म में लाने के लिए हम इस तरह से लिखें z माइनस 5x1 माइनस 6x2 माइनस 0a1 माइनस 0a2 माइनस ma1 माइनस ma2 is equal to 0. So we have now these 3 equations. This is our row 0, this is row 1, and this is row 2. So this is our table number 1. तो हमारे पास टोटल यहाँ पे 6 कॉलम्स हैं जिनके अंदर मॉडिफिकेशन होगी. एक है x1, एक है x2, एक है e1, दूसरा है e2, और एक है a1 और दूसरा है a2. और सिमिलरली हमने कहा था कि सिर्फ जो आर्टिफिशियल या स्लैक वेरिएबल हैं उनको हम बेसिक वेरिएबल के तौर पे ले सकते हैं. So that's why we have this e1 and a2 as a basic variables, which are 2 artificial variables. So here we have 3 rows, row number 0, row number 1, and row number 2. So these are the coefficients of the column in x1, these are in x2, these are in e1, these are in e2, और ये a1 में है और ये जो है हमारे पास a2 के coefficient है. So the initial tableau for this problem appears in the above table. So what is noticeable that the artificial variables are the basic variables in this initial solution, and these minus m coefficient in row 0 must be changed to 0 using row operations if the value of z to be read from row 0. So first job ये होगी कि artificial variables जो हैं इनको हमने इनके जो coefficients हैं यानी minus m इसको 0 बनाना. This should be our first job. So row 0 के ऊपर हमने 2 ऑपरेशन करनी है. So first of all we do that mr1 plus r0, so this is change in row 0, so which is equal to m minus m 0 m0 and 10 times m, और उसके बाद हमारे पास है वो minus 5 minus 6 0 0 0 0 0 0 minus m and 0. So this gives us
m-5, m-6, 0, 0, minus m. Here we will have 0, here we will have minus m, and here we will have 10m. So now this is new row 0. So now we still need to remove this minus m. आर्टिफिशियल वेरिएबल की जो कोफिशिएंट है, हमारा फर्स्ट जॉब है कि हमने इनको 0 बनाना है. So to do this we apply another operation on the new row 0. So this is our new row 0. Let's call it r0 dash. So what we do, so now we again change row 0 by asking for m times row 2 plus row 0 dash. This is now change in row 0, rather change in row 0 dash, जो कि हमारे पास न्यू रो 0 है. तो नई रो 0 में चेंज के लिए हम ये ऑपरेशन यूज़ करेंगे mr2 प्लस r0 डैश. तो हमारे पास r0 डैश तो ये है, तो हम mr2 को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं. So mr2 is 2m plus 4m 0 minus m 0m and 2 times m. So now this gives us 3m minus 5, 5m minus 6 minus m, and here we also have minus m 0 0 and 34, so rather 24m. So this is 34m. So now this would be the row zero in the next table, row 0 of next table. So now we have table number 2, जिसमें कोएफिशिएंट जो हैं a1 और a2 के वो 0 हैं. तो हमारा जो फर्स्ट एम होगा वो जो a1 के कोएफिशिएंट्स हैं उनको 0 बनाना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक देम 0. तो हम रो 1 के अंदर चेंजेस की है, रो ऑपरेशन अप्लाई किया है, और उससे जो हमारे पास नया टेबल आया है वो ये है, जिसमें सिर्फ रो 0 चेंज है और आर्टिफिशियल वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट्स हैं उसको हमने 0 के बराबर कर दिया है. सो नाउ वी अप्लाई रूल 1a. रूल 1a क्या कहता है कि हम चेक करें कि क्या इस रो के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू तो नहीं है x1 x2 e1 e2 और a1 a2 की. बट वी कैन सी के -6 प्लस 5m इज़ पॉजिटिव, क्योंकि ये m जो है हमने सपोज किया था कि बहुत बड़ी वैल्यू है, तो 5m - 6 विल बी अ पॉजिटिव नंबर. सो इट मीन्स कि ये सोल्यूशन जो है ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है. So in this initial solution, the non-basic variables are x1, x2, e1 and e2, and the basic variables are the two artificial variables with a1 which is equal to 10, a2 which is equal to 24 and z which is equal to 34m. तो इस वेरिएबल में हमारे पास बेसिकली 4 जो हैं वो नॉन बेसिक वेरिएबल हैं और 2 जो हैं वो बेसिक वेरिएबल हैं. अब हमने की कॉलम आइडेंटिफाई करना है बाय अप्लाइंग रूल 1. तो जो सबसे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, जो सबसे बड़ी पॉजिटिव वैल्यू है वो है इन कॉलम x2. सो दिस इज आवर की कॉलम. सो दिस इज की कॉलम एंड बेसिकली these two entries are transformed to 0 in the new table. तो पिछले टेबल और इस टेबल में फ़र्क ये है कि हमने इन एंट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर दिया 0 में, और फर्स्ट टेबल में these were the entries which were need to be transformed to 0. So now we have this key column which has the most positive value, जिसकी सबसे बड़ी पॉजिटिव वैल्यू है, वह है हमारा कॉलम x2. So x2 is the new variable जिसको अभी हमने नॉन बेसिक से बेसिक बनाना है, यानी x2 का हमने यहाँ पे लाना है. तो ये जो है हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं a1 और a2, और हमने ये जो नॉन बेसिक वेरिएबल है उसको हमने बेसिक बनाना है और इनमें से किसी एक के साथ रिप्लेस करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लीस्ट रेशो चेक करेंगे. तो रेशो क्या है हमारे पास, b1 जो है हमारे पास 10 है और x2 का जो कोफिशिएंट है वो 1 है.
So 10 by 1 is the ratio 10. So this corresponds to 10 by 1 which is 10. और 24 और 4 की जो रेशियो है वो 24 by 4 which is 6. So this corresponds to this 6. तो रो 2 का जो हमारी पास रेशियो है वो है लीस्ट रेशियो इन दोनों रेशियोज में से. So it means कि हमने इस वेरिएबल x2 को a2 की जगह पे लाना है, और a2 की जगह पे लाना है तो इसको हमने 0 0 1 बनाना होगा, क्योंकि हमने x2 के सामने 1 लाना है. So x2 column becomes the new key column, and so we want to transform minus 6 plus 5m 1 and 4 to 0 0 1. So we do some row operations to achieve our target. So we do for row 1 minus row 2 to make a change in row 1, and this gives us 4 4 minus 4 0 4 0 and 40. ये हमारे पास for row 1 है, और जो हमारे पास row 2 है वो होगी 2 4 0 minus 1 0 and 1 and 24. तो जब हम माइनस करेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस माइनस हो जाएगा. सो वी गेट 2 0 minus 4 1 4 and minus 1 वो 60. so this is our new row 1. तो ये हमारे पास नई रो 1 होगी. सो नाउ वी मेक अ चेंज इन R0. उसके लिए हम लेंगे 4R0 minus 6 plus 5m times R2, and we mentioned that it is change in R0. So basically for R0 के जो हमारे पास कोफिशिएंट होंगे minus 20 plus 12m, 4 times minus 6 plus 5m minus 4m, और ये भी होगा minus 4m 0 0 and 136m, और यहाँ पे होगा हमारे पास minus 12 plus 10m, यहाँ पे होगा पास 4 minus 6 plus 5m, यहाँ पे होगा आपके पास, यहाँ पे होगा 0, ये होगा 6 minus 5m, यहाँ पे भी होगा 0, यहाँ पे होगा minus 6 plus 5m, और 136m के नीचे होगा minus 144 plus 120m. तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, और ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, और ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, और ये जो ऊपर है ये भी माइनस जो है प्लस हो जाएगा, और ये जो नीचे वाला प्लस है ये माइनस हो जाएगा. सो वी गेट minus 8 plus 12m and 0 and minus 4m. यहाँ पे आएगा आपके पास minus 6 plus m, और इसके नीचे आपके पास आएगा 0, इन दोनों से आपके पास आएगा, तो ये इन दोनों से आया है, और ये जो है इन दोनों से आया है, और ये 0 यहाँ से आया है, और ये यहाँ से आया है आपके पास. तो ये जो लास्ट एंट्री है ये यहाँ से और इन दोनों से आई है, ये आपके पास होगी 144 plus 16m. और बेसिकली आखिरी जो चेंज है हमने रो 2 में लानी है, जिसको हमने 1 बनाना है, तो इसके लिए हम वी टेक 1/4 R2 which will gives us a change in R2, और R2 जो हमारे पास आएगा वो होगा हाफ 1 0 minus 1/4 0 1/4 and 6. So this will be our new
रो 1 और ये जो होगी हमारे पास ये होगी न्यू रो 2। तो ये तमाम हमारे पास न्यू रो 2 होगी। सो देन वी विल हैव दिस नेक्स्ट टेबल विच हैव ऑल दिस एंट्रीज। तो हमने जो आर्टिफिशियल वेरिएबल 2 था उसको रिप्लेस कर दिया है x2 से। सो दिस इज नाउ आवर न्यू टेबल। So in this new table we have two basic variables which is a1 and x2, and we also notice that if we apply a rule a1 then the solution is still not optimal, क्योंकि हमारे पास -6 plus m और -8 plus 2m ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि नेगेटिव या लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, क्योंकि m की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो इसलिए ये सोल्यूशन हमारे पास ऑप्टिमल नहीं है। तो हम कंटिन्यू करेंगे इस प्रोसेस को नेक्स्ट टेबल में। सो व्हाट वी डू इज़ दैट, सो वी फाइंड आउट दैट द की कॉलम इज़, सो जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है हमारे पास x1 कॉलम। सो x1 इज़ आवर की कॉलम। सो x1 इज़ द वेरिएबल विच वी आर गोइंग टू मेक बेसिक वेरिएबल, क्योंकि अभी हमारे पास जो है वो नॉन बेसिक वेरिएबल है, इसको हमने बेसिक वेरिएबल में चेंज करना है। तो व्हाट वी डू इज़ दैट वी फाइंड द लीस्ट रेशो। So the ratio of 16 over 2 is 8, and the ratio of 6 and divided by 1 by 2 is 12. So we have this as a least ratio. तो बेसिकली अब हमने जो वेरिएबल a1 है इसको रिप्लेस करना है x1 से नए टेबल में, और उसके अलावा हमने ट्रांसफॉर्म करना है इस x1 को 0, 1 और 0 में, क्योंकि 1 जो है वो a1 के सामने आएगा और बाकी जो इस कॉलम की एंट्रीज हैं इसको हमने 0 के बराबर बनाना होगा। सो वी वांट टू ट्रांसफॉर्म so -8 plus 2m, 2.5 to 0, 1 and 0। तो उसके लिए हम ये रो ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं for r2 minus r1 for the change in r2। So when we apply this we get 0 for 4, -2, -4, 2 and 8 as new coefficients in the row 2. So this is the new row 2. And similarly for the change in r0 we take -4 plus m r1 minus r0, so this is change in r0, so this gives us 0, 0, 16, 2 minus 16 plus 4m minus 2 plus 4m and minus 208. So this is our new row 0. And similarly for the change in r1 we take half r1, which is change in r1 so this gives us 0, 1, 0, minus 2, half, 2 minus 1 by 2, or 8. So in the new table now we have primarily this is if we look at row 0, तो अगर row 0 में देखा जाए तो ये हमारे पास कॉलम है B का जो कि B0 है, so this is B0। तो हमें जो बाकी तमाम कोफिशिएंट्स हैं वो हमें लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, और ये तमाम जो कोफिशिएंट्स हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। सो अगर हम इजीली किसी का भी जब भी हमारे पास सोल्यूशन आए रो ऑपरेशन से किसी भी इसको हम अगर लेस देन इक्वल टू 0 बना सकते हैं तो
हम बना लेंगे. So what we do is that now we change this new r0 dash, which is new r0 जो थी इसको हम r0 dash का नाम देते हैं, और हम एक नए r0 फाइंड करते हैं by applying row operation there. तो इसको हम नेगेटिव से, यानी जो इसकी पॉजिटिव वैल्यू है इसको हम नेगेटिव बना सकते हैं. So what we do, we multiply by -1/4. So -1/4 r0 dash is new r0, or rather new r0, which will appear in next table. So we basically multiply by -1/4, and what we get is, we rewrite this. तो हमारे पास जो नया रो 0 की कोफिशिएंट्स का कलेक्शन आएगा वो होगा 100 -4 -1/2 1 - m half -m and 52. This is our B0, और बाकी जो तमाम कोफिशिएंट्स हैं दे आर, और ये जो है ये रादर 1 नहीं होगा क्योंकि ये z का कोफिशिएंट है. सो रादर बाकी तमाम जो है हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं ये लेस देन इक्वल टू 0 हैं. सो दिस इज़ द x1, दिस इज़ x2, एंड दिस इज़ e1, दिस इज़ e2. ये हमारे पास a1 है और ये a2 है, और ये तमाम जो कोफिशिएंट्स हैं ये नॉन पॉजिटिव हैं, यानी लेस देन इक्वल टू 0 है. सो दिस इज़ द फाइनल टेबल. क्योंकि नाउ ऑल आवर कोफिशिएंट्स आर less than equal to 0 in row 0, so we conclude that this is the optimal solution. So the z is maximized at a value of 52 when x1 is 8 and x2 is 2. So if you remember our objective function, it was z is equal to 5x1 plus 6x2. So 5 times 8 plus 6 times 2 is equal to 52. So that's how you solve a question of minimization by using simplex method. So now we move to the special phenomena, यानी जो चंद खुसूसी किस्म की situations आती हैं उनको हम discuss करेंगे examples से. So in chapter 10, certain phenomena which can arise when solving linear programming problems were discussed. Specifically, the phenomena of alternative optimal solutions, no feasible solution, and unbounded solutions were presented. So in this section we discuss the manner in which these phenomena occur when solving by simplex method. तो वो तमाम special phenomena जो हमने chapter 10 में पढ़े थे, यानी एक तो alternative optimal solution हो, या फिर no feasible solution हो, या फिर unbounded solution हो, तो simplex method से solve करते हुए हम कब identify कर सकते हैं कि इस किस्म का phenomena occur कर रहा है. So the first of all is alternative optimal solutions. Alternative optimal solution result when the objective function is parallel to a constraint which binds in the direction of optimization. So in two variable problems we are made aware of alternative optimal solutions with the corner point method, and when a tie occurs for the optimal corner point. So when using the simplex method, what happens? Alternative optimal solutions are indicated when an optimal solution has been identified and the row 0 coefficient for a non-basic variable equals 0. तो primarily alternative optimal solution simplex method से कब हम find कर सकते हैं? एक condition तो ये है कि हमारे पास optimal solution आ चुका हो, यानी जब तक हमारे पास optimal solution नहीं आता हम alternative की बात नहीं कर सकते. लेकिन जब हमारे पास optimal solution आ जाए और row 0 में किसी नॉन बेसिक वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 हो, तो तब हम कहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है ये अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी है. So the first condition confirms that there is no better solution than the present solution. The presence of a 0 in row 0 for a non-basic variable indicates that the non-basic variable can become a basic variable, or which means that it can become positive. And the current value of the objective function known to be optimal will not change.
तो यानी अगर आपके पास किसी नॉन बेसिक वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 आ जाए तो इट मीन्स कि इसको बेसिक बनाया जा सकता है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ये जो वैल्यू है ये चेंज नहीं होगी, क्योंकि यही हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा. सो लेट्स डू एन एग्जांपल. So the question is to maximize z is equal to 6x1 plus 4x2 subject to x1 plus x2 is less than equal to 5 and 3x1 plus 2x2 is less than equal to 12 with x1 and x2 greater than equal to 0. So this would be our table number 1. Since now we have practiced a lot, so we can just straight away go and write down the table number 1. तो टेबल नंबर 1 में हमारे पास दो स्लैक वेरिएबल ऐड होंगे क्योंकि दोनों कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू टाइप की हैं और वही दो स्लैक वेरिएबल हमारे दो बेसिक वेरिएबल्स होंगे. सो द अबव टेबल प्रेजेंट्स द इनिशियल सिंप्लेक्स with s1 is 5 and s2 is equal to 12 being the basic variables, while x1 and x2 are non-basic variables. So by rule 1 we see that a better solution exists. So using rule 2 x1 is selected as a new basic variable क्योंकि हमारे पास ये सबसे नेगेटिव वैल्यू है तो ये हमारे पास की कॉलम है और इसलिए x1 हमारा जो होगा न्यू बेसिक वेरिएबल होगा. तो फिर हम यहाँ पे रेशो फाइंड करेंगे जो कि 5/1 इज इक्वल टू 5 है और 12/3 इज इक्वल टू 4 है. तो इट मीन्स के S2 को हम रिप्लेस करेंगे x1 से नए टेबल में. ठीक है. सो the x1 column becomes the key column. So the bi divided by aik ratios are computed with s2 identified as the departing variable. So s2 डिपार्ट कर जाएगा और उसकी जगह पे हमारे पास x1 आ जाएगा. So the elements in x1 columns are transformed from, तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट्स थे -6, 1 and 3. इनको हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया 0, 0, 1 में using row operation with the resulting simplex tableau shown in the following table. So when we do the row operations जो कि हमने पिछली काफ़ी सारी एग्जांपल्स में की हैं, so now this is the new table which we get. This is table number 2. So in this new solution x1 has replaced s2 in the basic variables यानी in basis. So in this new solution x1 has replaced s2 in this basis यानी आपने देखा कि जो s2 था उसको x1 ने रिप्लेस कर दिया है. So the basic variables are s1 is equal to 1 and x1 is equal to 4. हमारे पास दो बेसिक वेरिएबल हैं, s1 1 है और x1 जो है वो 4 है. And the resulting objective functions value of z is equal to 24 और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू जो है वो 24 है. So now what is the indication? यहाँ पे देखें तो आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया है. So now if you apply the rule 1, तो यहाँ पे कोई भी जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव नहीं है. So तमाम जो कोफिशिएंट्स हैं वो नॉन नेगेटिव हैं, तो इसलिए दिस इज़ द इंडिकेशन ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन. लेकिन उसके अलावा हम देख सकते हैं कि x2 जो है हमारा अभी भी एक नॉन बेसिक वेरिएबल है. So x2 is still नॉन बेसिक और इसका कोफिशिएंट जो है वो रो 0 में 0 आ रहा है. सो इफ़ यू रिकॉल दिस वाज द कंडीशन नंबर 2. द रो 0 कोफिशिएंट फॉर ए नॉन बेसिक वेरिएबल इक्वल्स 0. तो x2 हमारा नॉन बेसिक वेरिएबल है और उसका कोफिशिएंट 0 है. अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन इंडिकेशन, इट मीन्स दैट दिस इज द alternative optimal solution indication. So now this is our table number 2 और यहाँ पे देखा जाए तो तमाम वैल्यूज पॉजिटिव हैं. So since all row 0 values are greater than equal to 0, this indicates optimal solution.
However, for the non-basic variable x2, the R0 value is 0, which suggests, so this suggests that x2 can become basic variable, and the current optimal solution will not change. So we transform zero, 1 by 3 and 2 by 3 to 0 1 0, क्योंकि इस टेबल में हमारे पास लीस्ट रेशो क्या है. So now this is the key column. So here we have the ratio. 1 divided by 1 by 3 is 3, and 4 divided by 2 by 3 is 6. So this is least. So basically हम S1 को X2 से रिप्लेस कर सकते हैं, और इसको हम 0 1 by 3 एंड 2 by 3 जो है इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे 0 1 0 में. तो चूँकि हमारे पास एक तो पहले ही 0 है, तो हम जस्ट दो सिंपल रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे. और so in the above table we treat the x2 column as a key column associated with the entry of the new basic variables x2. So the bi divided by aik ratios are computed as usual, and s1 is identified as the departing variable. तो हमने ऐसी तरह ही लीस्ट रेशो फाइंड की, और s1 के सामने जो था हमारे पास लीस्ट वैल्यू आई है, तो इसलिए s1 को हम रिप्लेस करेंगे x2 से. So when we replace this, then what we get is that x2 is 3 and z is equal to 24. तो हमारे पास x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 3 है, और z की वैल्यू 24 है. So now all the conditions of optimal solutions are identified. So if we recall our objective function, which was z is equal to 6x1 plus 4x2, we have z is equal to 6 times 3, and so we have 6 times 2 plus 4 times 3, which is 24. So x1 is equal to 2 and x2 is equal to 3 and z is equal to 24. So z is equal to 24 is the optimal solution at x1 is equal to 2 and x2 is equal to 3. तो अगर नॉन बेसिक वेरिएबल के नीचे अगर आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन की इंडिकेशन हो और किसी नॉन बेसिक वेरिएबल के नीचे ज़ीरो हो, तो तब भी आप बेसिकली को अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ पे अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे कि उसी जो नॉन बेसिक वेरिएबल है उसको आप बेसिक वेरिएबल ले लेंगे, यानी बेसिक वेरिएबल बना लेंगे जो तमाम स्टेप्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, और उसके बाद जो आपके पास आएगा वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा. सो नो फीजिबल सॉल्यूशंस. So a problem has no feasible solution if there are no values for the variables which satisfy all the constraints. So the condition of no feasible solution is signaled in the simplex method when an artificial variable appears in an optimal basis at a positive value. तो हमारे पास no feasible solution कब आता है? जब हमारे पास एक artificial variable जो है वो उसकी positive value आ जाए optimal solution के अंदर. So this is the condition. So we solve the following linear programming problem, which is maximize z is equal to 10x1 plus 2x2 subject to x1 plus x2 is less than or equal to 5 and x1 plus x2 is greater than or equal to 20. और by inspection we can see कि इसका कोई
feasible solution नहीं होगा। अगर हम ये दो लाइंस ड्रॉ करें और solution ग्राफ से भी देख सकते हैं कि नहीं होगा, but we want to understand how we can see such things by using simplex method. So table 1 basically encodes all the information of this problem. हमारे पास एक लेस देन इक्वल टू की कंस्ट्रेंट थी, तो उसकी कॉरेस्पॉन्ड हमारे पास एक स्लैक वेरिएबल आया है, और एक हमारे पास कंस्ट्रेंट थी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो उसकी कॉरेस्पॉन्ड हमारे पास एक सरप्लस वेरिएबल आया है, और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल आया है, और एक सरप्लस वेरिएबल आया है। तो बेसिक वेरिएबल्स हम चूँकि स्लैक वेरिएबल्स और आर्टिफिशियल वेरिएबल को लेते हैं, तो S1 और A2 हमारे बेसिक वेरिएबल होंगे, और A2 का जो कोएफिशिएंट होगा वो m होगा, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम जो गिवन एग्जांपल है उससे ये लिख सकते हैं। तो एज आई ऑलवेज सेड कि जब भी आर्टिफिशियल वेरिएबल आपके पास आए और उसकी वैल्यू m हो, तो आपकी जो फर्स्ट एम होता है वो इस m को 0 बनाना होता है। सो यू अप्लाई रो ऑपरेशंस एंड फाइंड आउट दैट दिस इज योर टेबल नंबर 2 वेयर द कोएफिशिएंट ऑफ this artificial variable is now 0. So this is always your first job, to get this coefficient equal to 0. So once this is equal to 0, so here is the if you look at the row 0, then this is of course not the optimal solution, क्योंकि row 0 में तमाम values इस वक्त जो हैं वो greater than equal to 0 नहीं है, negative values में है, तो ये आपका optimal solution नहीं हो सकता। So you start with identifying this key column. दिस इज योर की कॉलम, क्योंकि ये सबसे नेगेटिव वैल्यू है, और उसके सामने आपने क्या किया है कि आपने लीस्ट रेशो फाइंड की है, तो एक रेशो जो है वो 5 है और एक रेशो जो है वो 20 है। सो प्राइमरीली यू कैन सी के देयर इज सो इन द नेक्स्ट टेबल S1 को जो है हम रिप्लेस करेंगे X2 से, क्योंकि S1 का जो कॉलम है S1 की जो रो है उसकी जो रेशो है वो लीस्ट है। सो इन द नेक्स्ट टेबल वी हैव नाउ दिस X2 in the place of S1. So X2 is our new basic variable. So there are now if you look at this row 0, अगर आप अब रो 0 को देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो तमाम वैल्यूज जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन की इंडिकेशन है। सो अबव 3 टेबल्स प्रेजेंट द सिंप्लेक्स आइटरेशंस इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो यानी ऊपर जो हमने 3 टेबल आपको दिए हैं, ये इन 3 जो आइटरेशंस हैं इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आपके पास यहाँ पे इंडिकेशन ये है कि ये एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। सो ऑल रो 0 कोएफिशिएंट्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इंडिकेटिंग एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हाउएवर, one of the basic variables is A2 and it has a value of 15. That is, the optimal solution is X2 is equal to 5, A2 is equal to 15, and Z is equal to minus 15m plus 100. Since an artificial variable have no meaning in a linear programming problem, and assignment of A2 is equal to 15 signals no feasible solution to the problem. तो बज़ाहिर हमें लगता है कि ये जो सोल्यूशन है ये ऑप्टिमल है, लेकिन चूँकि हमने शुरू में कहा था कि अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल की कोई वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो उसका मतलब है कि आपका जो सोल्यूशन है वो वैलिड नहीं है, और आर्टिफिशियल वेरिएबल की कोई ख़ास अहमियत नहीं होती है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, अपार्ट फ्रॉम यूजिंग फॉर मैनिपुलेशन एंड कैलकुलेशंस। तो इसलिए चूँकि इस केस में हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू 15 आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो फीजिबल नहीं है। सो बेसिकली हमने शुरू में स्टेट किया कि कंडीशन की क्या थी। द कंडीशन ऑफ नो फीजिबल सोल्यूशन इज सिग्नल्ड इन द सिंप्लेक्स मेथड व्हेन एन आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर्स इन एन ऑप्टिमल बेसिस एट ए पॉजिटिव वैल्यू। तो हम ऑप्टिमल बेसिस में हैं इस वक्त, क्योंकि हमारे पास इंडिकेशन है ऑप्टिमल सोल्यूशन की, और A2 पॉजिटिव आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये जो सोल्यूशन है फीजिबल नहीं है। सो अनबाउंडेड सॉल्यूशंस। So if we recall that unbounded solutions exist when there is an unbounded solution space. So improvement in the objective function occurs with movement in the direction of the unbounded portion of the solution space. If at
any iteration of the simplex method, the AIK values are all 0 or negative for the variable selected to become the new basic variables, there is an unbounded solution for the linear programming problem. तो सिंप्लेक्स मेथड में बेसिकली कंडीशन ये है कि जिस वेरिएबल को आप बेसिक वेरिएबल बनाने लगे हैं, तो अगर उसके जो कोफिशिएंट AIK की वैल्यूज़ हैं अगर वो तमाम ज़ीरो हों तो सोल्यूशन आपके पास अनबाउंडेड होगा. सो कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम. Maximize z is equal to minus 2x1 plus 3x2 subject to x1 is less than equal to 10 and 2x1 minus x2 is less than equal to 30. x1 and x2 is greater than equal to 0. So now if you write down this information in the table, क्योंकि आपके पास दो लेस देन इक्वल टू की कंस्ट्रेंट हैं तो आपने दो स्लैक वेरिएबल ऐड किए हैं जो कि आपके बेसिक वेरिएबल्स होंगे और आपके पास यहाँ पे टोटल 4 वेरिएबल्स हैं. सो वी रीटेक द सेम टेबल हेयर एंड डिस्कस अबाउट this table. So the above table represents the initial simplex tableau. So row 0 indicates that the non-basic variable x2 will result in an improved value of z. इसका मतलब ये है कि यानी चूँकि x2 की वैल्यू -3 है जो कि नेगेटिव है, यानी तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है या नॉन नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे इंडिकेशन ये है कि जो -3 है यानी जो x2 है ये आपको इम्प्रूव वैल्यू ऑफ z देगा. यानी जब आप इस पे की कॉलम लेकर रेशियो लेंगे तो उसके बाद जो z की वैल्यू आएगी वो एक इम्प्रूव वैल्यू होगी. बट देयर इज़ एन इशू, हाउएवर द वैल्यूज़ आर 0 and 1. So the values are 0 and -1. So these suggest that for each unit introduced of x2, s1 will not change and s2 will increase by 1 unit. तो ये जो आपके पास कोफिशिएंट हैं x2 के 0 और -1 है, तो इसकी इंडिकेशन ये है कि s1 तो चेंज नहीं होगा और जो आपका s2 है वो 1 यूनिट से इंक्रीज कर जाएगा. सो नीदर ऑफ दीज बेसिक वेरिएबल्स विल बी ड्रिवन टू 0. इसका मतलब है कि इसमें से कोई भी जो बेसिक वेरिएबल है ये इसको आप 0 नहीं कर सकते. सो दिस सिग्नल्स एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन. तो प्राइमरीली यहाँ पे देखिए आपके पास एक वेरिएबल है जो कि अभी नॉन बेसिक है और हमारे पास कंडीशन ये थी, ये कंडीशन नंबर 3 जो है इस स्लाइड पे कि so if at any iteration of the simplex method the AIK values are all 0 or negative for the variable selected to become the new basic variables, there is an unbounded solution for the linear programming problem. जब हमने देखा कि x2 जो है हमारा वो वेरिएबल है जिसको हमने बेसिक बनाना है, लेकिन इसके जो तमाम कोफिशिएंट्स हैं -3 के नीचे वो या तो 0 हैं या फिर नेगेटिव हैं. तो अगर ऐसी आपके पास कोई सिचुएशन आएगी तो इस सॉल्यूशन ऐसा जो सॉल्यूशन होगा वो आपके पास अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा. उससे पिछली एग्जांपल में हम जिसको भी बनाते थे तो हमारे पास ये कंडीशन नहीं आई थी. सो इफ़ यू लुक बैक एट योर एग्जांपल्स विद डिटेल यू विल फाइंड आउट दैट दिस इज़ द न्यू फिनोमेना. सो अनबाउंडेड सॉल्यूशन तब आएगा अगर जिस वेरिएबल को हम बेसिक बनाने जा रहे हैं उसके नीचे जो कोफिशिएंट्स हैं वो या तो 0 हों या फिर नेगेटिव हों. सो दिस वाज टुडेज़ लेक्चर. सो वी स्टार्टेड विद मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स. उसके बाद हमने 3 स्पेशल फिनोमेना पढ़े, अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशंस पढ़े, नो फीजिबल सॉल्यूशन कब होगा और अनबाउंडेड सॉल्यूशन कब होगा जब आप सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर रहे हों. तो उसकी तमाम हमने निशानियां और उसकी इंडिकेशन पढ़ी और उसके ऊपर हमने एग्जाम्पल से ये चीज़ें वेरीफाई की. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ द डुअल प्रॉब्लम. उसके बाद हम पढ़ेंगे फार्मूलेशन ऑफ द डुअल प्रॉब्लम. उसके बाद हम प्राइमल डुअल सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इनकी और उसके एट द एंड हम कुछ साथ साथ एग्जांपल्स भी करेंगे. सो दिस वाज टुडेज़ लेक्चर. उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपने
सिंप्लेक्स मेथड से मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम और जो स्पेशल फिनोमेना अकर होते हैं उनके बारे में सीखा होगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।